गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंटिन्यूएशन पार्ट, कल अपन क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेरिवेशन देखे थे इन केस ऑफ रॉड, एंड आज उसके एप्लीकेशंस देखेंगे थोड़े प्रॉब्लम्स के रूप में। ठीक है ना बेटा। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड का फार्मूला क्या था बेटा, k लैम्डा बाय d इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, अब उसके आज एप्लीकेशंस देखेंगे। एक मेजर एप्लीकेशन, एक छोटा प्रॉब्लम लेंगे बेटा। अगर सोचो कि प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है, आपको एक रॉड, इनफाइनाइट रॉड दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, एक इनफाइनाइट रॉड दिया गया है। ठीक है, सो यहां पे एक चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। कौन सी इनफाइनाइट रॉड बेटा, ये चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, इस चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड यहां पे एक d दूरी पे एक q चार्ज और m मास का पार्टिकल रखा हुआ है, and this particle is in equilibrium due to electrostatic force of attraction and electrostatic force of repulsion and the gravitational force of attraction. So इसके ऊपर gravitational force कितना रहेगा, mg। ठीक है ना बेटा, and electrostatic force कितना रहेगा बेटा, बोलो qe। and what is the e value for the infinite rod, 2k lambda by d। what is the 2k lambda by d? So this two will be in the balanced condition at equilibrium। उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम में दिया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ आई स्लाइटली डिस्प्लेस द चार्ज्ड बॉडी फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, व्हाट हैपेंड इफ आई स्लाइटली डिस्प्लेस टुवर्ड्स दिस वन, देन व्हाट हैपेंड बेटा, it will start doing oscillation। it will start doing oscillation। why? Because when it come down, then what will happen, then the electrostatic force of repulsion will repel this one. As it come up, it goes up, the weight will not allow the body to go up, so that's why it starts oscillating. So what the question is that, find the time period. What is the time period of oscillation? Time period of oscillation. Got the point? What he is asking? So as we know that at equilibrium, both the forces are same. There is a gravitational force and electrostatic force. QE should be equal to mg. ठीक है, but E is equal to what for the infinite rod, 2k lambda by d. So I can rewrite it as q into 2k lambda by d should be equal to mg. ठीक है ना बेटा, 2k lambda by d is equal to mg. So if I write, if I slightly displace it away from this one, then what will happen, that when it displaces, the weight will not allow the body. Then the next net force, F net, if I write it as an F net is equal to mg minus, I can rewrite it as an 2k lambda into q divided by d plus x. How much I displaced here? X amount I displaced. This is the F net. So from this one, little bit alteration if I do. What he is asking? He is asking the time period of oscillation. Just see that mg minus 2kq lambda by d can be taken common. Yes, 1 plus x by d. See, mg should be equal to what beta? 2kq lambda by d. So I can rewrite this one as an mg. So mg minus mg divided by 1 plus x by d. This is what beta? F net. क्लियर? सो यहां से मैंने mg कॉमन निकाल सकता हूं। हाँ भाई निकाल लो, mg कॉमन निकाल लो। सो F net इज इक्वल टू mg into 1 minus, what I can write, 1 by 1 plus x by d. Then what I can write it as mg into 1 minus, so this goes to the numerator, then it comes to the d by d plus x, cross multiplying this thing, mg into d plus x minus d upon d plus x, then d get cancels. Then what I can write it as mg x upon d plus x. This is what beta? F net. This is what? F net. So if I write this one, mg of d, mg of x, if I neglect if the displacement is very slight, very small displacement, then what I can write? I can neglect the x value.
then the remaining equation will be coming like this. What is that remaining equation? F net is equal to क्या आएगा बेटा? mgx upon d. For what value बेटा? When d is greater than x. When d is greater than x. Okay, what I can write it as? So F net is equal to, from this one, if I compare this equation with our oscillatory equation, F is equal to minus kx. Here itself also you can say that x will be in the downward direction, then the force will be in the upward direction. Means both are in opposite direction. So I can rewrite it as a minus mg. So from this one, what is the k value? K is what? Restoring force constant. Then k को मैं क्या बोलूँ बेटा? mg by d. Then what is the time period? Then the time period is equal to what I can write it as? A time period t is equal to 2 pi into under root of m by k. Substitute. Then what is that? T is equal to 2 pi into under root of m by mg by d. Mm cancel. Then it comes to the time period t is equal to 2 pi into under root of d by g. Got the point? What is the time period? The time period will be like this. Time period 2 pi into under root of g by d is the time period of oscillation. Is the time period of oscillation. Got the point? मतलब जब एक रॉड को अगर रॉड के इन्फ्लुएंस से, हालांकि प्रैक्टिकलिटी में देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, बट अगर उन्होंने प्रॉब्लम में बोला गया, मेंशन किया गया कि electrostatic force will be equal to the weight of the body, then at that particular point it is an imaginary concept. The time period of oscillation will be 2 pi into under root of g by d is nothing but the time period of the oscillation. What the point, beta? Just copy it. What I did here, what we did actually here, the very simple, we took the F net formula. We took the F net formula and we converted the F net formula in terms of our oscillatory equation formula. F is equal to minus kx. F is equal to minus kx. Got the point? Pause the video and copy the things. चलो बेटा, एक प्रॉब्लम लेंगे. अगर आपको पूछा गया कि एक स्क्वायर प्लेटेड रॉड है, ऐसे इमेजिन करेंगे. दिस इज अ स्क्वायर रॉड. चलो बेटा, और थोड़े एप्लीकेशंस लेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के. छोटे छोटे एप्लीकेशंस. अगर सोचो कि आपको दिया गया है एक रॉड जो कि एल शेप में, कौन सी शेप में है बेटा? एल शेप में रॉड है, ठीक है ना? और आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सोचो कि इमेजिन करो, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी उन्होंने दिया a, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी उन्होंने दिया a. At this particular point, find the electric intensity बोल रहा है. So how to determine? This is a one rod. This is also one rod. Then electric intensity. यहाँ पे electric intensity का डायरेक्शन किधर होगा बेटा? इधर. Due to this rod. And due to this rod, देखिए इधर. मतलब this can be written as an E1 and this can be written as an E2. It's a finite rods or infinite rods? Finite rods. So what is the angle here? 45 degrees. And it is also 45 degrees. It is also 45 degrees. It is also better 45 degrees. Then finite rod formula is what? Root 2k lambda by d. What is that? So here root 2k lambda by d. D का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? A is nothing but given. And here it's what? Root 2k lambda by A. Then what is the net force? Net intensity? Angular bisector under root of E1 square plus E2 square. Simple. So what I can write as a root 2 of root 2k lambda by A. That can be written as a what? Electric intensity E net is equal to 2k lambda by A. Got that point? Very simple problem. Correct? So very important. So next problem. Next mod. If I given by, अगर ऐसा एल शेप में रॉड नहीं दिया गया है आपको दिया गया है एक यू शेप रॉड.
एनीथिंग यू कैन सॉल्व, इट्स नॉट अ बिग थिंग एक्चुअली। अगर सोचो कि आपको एक यू शेप में रॉड दिया गया है, then at this particular point electric intensity is asking, then due to this rod the electric intensity will be in this direction, and due to this rod the electric intensity will be in this direction, they nullify each other's effect. Then what is the net electric intensity beta? Due to this rod the electric intensity will be in this way, and what is that? It is a finite rod, so that's why what I can write it as a root 2 k lambda by d, the very simple one, correct? This effect cancelled by this one, so net is nothing but the root 2 k lambda by d. अगर मैंने एक स्क्वायर शेप्ड रॉड लिया, यहाँ पे भी रॉड है, then again what will happen? Here itself also root 2 k lambda by d. Then the intensity at the center will be 0. Then the intensity at the center will be 0. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखेंगे आप अलग अलग publications में. It's not a big deal. What is the once you got the idea about the how to solve the rod formula for the infinite, finite, and semi-infinite rods, then it will be very easier to understand the rod electric intensity. Okay. So we got the electric intensity information about the rod. Let us consider अगर combined rod, combined charges में ही अगर rod ना देते हुए आपको combined charge ring दिया गया, सोचो, इमेजिन करो एक चार्ज रिंग इफ आई टेक प्लस 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 चार्ज रिंग इफ आई टेकिंग, then what will be the thing? At the center what is the intensity? Due to all the electric intensity will be what? 0. Why? Because this will be influencing in this direction, 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 and the net intensity at the center of the ring will be what? 0. The net intensity will be 0, obviously. But if he is asking, find the electric intensity along the axis of a charged ring, then at that particular point it is not 0. So let us calculate the electric intensity due to charged ring along the axis of a charged ring. Let us consider a ring of radius r. Let us consider a ring of radius r. ठीक है ना बेटा? This is the ring of radius r. What is the radius beta? R is the radius. And you are asked by find the electric intensity at a distance of x from the ring. यहाँ पे अगर मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा तो इसके वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी वो पूछ रहा है. इट इज अ चार्ज्ड रिंग. ओके, यहाँ पे चार्ज पूरा कैसा बिखरा पड़ा हुआ है? लाइन में है या सरफेस पे? लाइन में रहेगा. इट्स अ रिंग ओनली. सो इट्स कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिंग कितना है? 2 पाई आर. सो 2 पाई आर इज द लेंथ. मींस व्हाट? अगर 2 पाई आर लेंथ में क्यू चार्ज है, ठीक है ना बेटा? Correct. Total charge is how much beta? So linear charge density. How much linear charge density? Lambda is equal to what? Linear charge density is nothing but the charge upon unit length. Length is what? 2 pi r. So linear charge density will be q is lambda is equal to q by 2 pi r. If I write it as an, so what he is asking, find the electric intensity at the x distance along the axis. He is asking. अगर सोचो कि ऐसे सिचुएशन में है अपन पूरे चार्जेस के वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी तो एक ही बार निकाल नहीं पाएंगे, तो अपन इसको छोटे छोटे माइन्यूट एलिमेंटल पार्टिकल्स के रूप में अपन कट करेंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में इमेजिन करेंगे. अगर सोचो कि ये एक माइन्यूट पार्ट है रिंग का, जैसा इमेजिन करो इट्स अ रिंग ऑफ, देन इट विल बी एक्सेस एंड हियर द इट्स अ माइन्यूट पार्ट जिसमें जिसकी लेंथ dl है, स्मॉलेस्ट लेंथ, और जिसमें चार्ज कितना है बेटा? dq चार्ज है. इमेजिन करेंगे तो इस चार्ज के वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी पहले निकालेंगे. दिस इज द इंटेंसिटी इन दिस डायरेक्शन. इज इट क्लियर? व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा. लेट्स इमेजिन इस dl लेंथ के वजह से dq का चार्ज हुआ, dq के चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी अपन ने अगर de माना तो de इज इक्वल टू, व्हाट इज द फार्मूला? de इज इक्वल टू k dq अपॉन r. r is how much better? This is x, this is r, then it is what? Under root of r square plus x square. Then I can rewrite it as under root of r square plus x square whole square. See, what is a dq? See, dq is equal to what? Lambda dl. I can write it as length of the one will be lambda. Lambda is a linear charge density, and how much length is there?
dl length is there. So I can rewrite it as what k dq is equal to lambda dl upon under root of r square plus x square whole square. ठीक है ना बेटा? So but lambda is equal to what? Lambda is equal to q by 2 pi r. Substitute there. Correct? So what I can write as k into q by 2 pi r into dl into 2 pi r into r square plus x square. Square root get cancels. See, this is what better? Electric intensity due to the smallest portion of the charged ring. Then see, if it is a theta, then this is also theta. This electric intensity will be resolved in two of its components. That one is the dE cos theta and another one is what beta? dE sin theta. Clear beta? dE cos theta and dE sin theta. See how many elemental particles are there? 2 pi r लेंथ में पूरे एलिमेंटल पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे भी एक एलिमेंटल पार्टिकल होगा जिसकी इंटेंसिटी इधर होगी. उसको रिजॉल्व करने के बाद इधर डी कॉस थीटा आएगा, इधर डी साइन थीटा आएगा. ये डी साइन थीटा इसको नलिफाई करेगा. मतलब ऑल डी साइन थीटास नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. द टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज हाउ मच बेटा? Sum of all dE cos theta. Sum of all dE cos theta. So I can rewrite it as a correct टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अगर मैंने पहले dE cos थीटा एक के बारे में लिखूं तो dE cos थीटा कितना होगा? देन dE cos थीटा इज इक्वल टू kq dl डिवाइडेड बाय 2 pi r into r square plus x square cos theta कितना है बेटा? x upon under root of r square plus x square. Cos theta is equal to x upon under root of r square plus x square. Got the point? Under root of r square plus x square, r square plus x square कितना होगा बेटा बोलो? r square plus x square whole to the power of 3 by 2. Then what I can write it as an I can rewrite it as an that dE cos theta is equal to simply what I can write kq dl into x upon 2 pi r into r square plus x square whole to the power of 3 by 2. What the point? In this situation, k is a constant or not? Yes, obviously. Q is the charge of the body is constant. X is the resistance is also a constant. 2 pi r square plus x square whole to the power of 3 by 2 is a constant. What is a variable? यहाँ पे अपन variable क्या लिए थे बेटा? dl. Correct? So if I take it for the total electric intensity, then what will be the limit of this one? Correct? ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा? 0 से लेके 2 pi r तक. मतलब इसमें वेरिएबल क्या हो गया? dl is the variable. So I can integrate this one with a help like this बेटा. See dE cos theta, integration of dE cos theta is nothing but the kqx divided by what I can write doesn't it? 2 pi r into r square plus x square whole to the power of 3 by 2 integration of dl. And what is the limit beta? 0 to 2 pi r. So if I write this one, what I can write it as kqx dl, integration of dl is nothing but the total length l substitute it as 2 pi r divided by 2 pi r into r square plus x square whole to the power of 3 by 2. 2 pi r cancel. So this is only the net electric intensity. Why? Because the d sin theta components are cancelling each other. Then total electric intensity is nothing but the sum of d cos theta. So that's why I can rewrite it as what beta? E net is equal to, then E net is equal to, what is the formula beta? E net is equal to kqx divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. यहाँ पे लिख देंगे net electric intensity E net is equal to what I can write as kqx divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. Electric intensity along the axis of a charged ring. Electric intensity along the axis of a charged ring. देखो बेटा यहाँ पे x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो. x is equal to 0 मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी एट द सेंटर. एट द सेंटर कितना होगा? अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा. मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0. ठीक है बेटा. So what is the electric intensity along the axis of a charged ring? kqx divided by
आई कैन रीराइट इट अपने k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी ले सकता हूं, तो अननेसेसरी. सो E net इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला बेटा, kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2. द वेरी सिंपल प्रूफ, very easy to understand also. So what is the E net formula beta? Electric intensity kqx divided by r square plus x square whole to the power of 3/2. Just pause and copy the things. चलो बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग along the axis of the ring का फार्मूला क्या देखे थे बेटा अपन, kqx upon r square plus x square whole to the power of 3/2. This is the electric intensity along the axis. Just imagine करो बेटा, अगर सोचो मैंने एक चार्ज रिंग लिया, कौन सी रिंग लिया बेटा, चार्ज रिंग. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सोचो कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी रहेगी, किस डायरेक्शन में. अगर सोचो कि इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो किधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, बाहर की डायरेक्शन. अगर सोचो कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये सब नेगेटिवली चार्ज्ड रिंग है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर रहेगी, याद रखना है. अगर सोचो, इमेजिन करो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो वेयर इट कैन बी कमिंग आउट, कहाँ पे आएगी वो, इधर. क्लियर बेटा. सो ये डायरेक्शंस आपको बहुत मायने रखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. देखो बेटा, यहां पे मैंने अगर x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो E इज इक्वल टू व्हाट आई कैन राइट एज E इज इक्वल टू 0. मतलब एट द सेंटर ऑफ द रिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, 0. ठीक है. एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन 1 by infinity is also 0. So again electric intensity is equal to 0. Electric intensity is equal to 0. Means x is equal to 0 पे E is equal to 0, x is equal to infinity पे भी E is equal to 0. इसका मतलब यहाँ पे 0 तो अनंत पे भी 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हुआ, कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम हुआ, और वहां से वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था. तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा. और इधर के डायरेक्शन में भी सेम आएगा बेटा. करेक्ट. अगर सोचो दिस इज व्हाट ग्राफ बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस इन केस ऑफ व्हाट, चार्ज रिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग. तो कहां पे मैक्सिमम होगी, कौन से दूरी पे. अगर सोचो कि ये दूरी आपको निकालना है, तो ये दूरी को मैंने x मानू, यहां पे मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हुआ, E should be maximum. इसका मतलब क्या हुआ, dE by dx should be equal to 0. The condition for the maximum. Correct. dE by dx is equal to 0 for the condition. So, got the graph, how the graph is moving beta. The very simple, as you go away from the electric intensity, just पहले imagine करोगे कि यहां से लेके बहुत कम दूरी तक ये ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगी, ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगी. जैसी दूरी बढ़ेगी तो वो पैराबोलिक हो जाएगी. ठीक है ना बेटा, वेरी सिंपल. करेक्ट. एट वेरी स्मॉलर टू स्मॉलर डिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी, द कर्व ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी स्ट्रेट लाइन. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी स्ट्रेट लाइन. ठीक है, मैं अपने को समझ में आया. सो अगर मैंने इस दूरी के बारे में डिटरमाइन करना चाहा, मतलब एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. Maximum means what, the differentiation of that will be 0. So इसको मैंने differentiate करूं and equal to 0 करूं, तो dE by dx, यहाँ पे दो variables है. Clear है. So I can apply UV method. Once if I differentiate this one, this will be keeping constant, then differentiate this one by keeping this constant, then dE by dx is equal to 0 is equal to what I can write it as kq, differentiating this one into 1 divided by r square plus x square whole to the power of 3/2 plus again differentiating this one. So what I can write as kqx, this goes to the numerator, comes to the r square plus x square whole to the power of -3/2. तो -3/2 आएगा यहाँ पे, r square plus x square whole to the power of -3/2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, बोलो. -3/2 into r square plus x square whole to the power of -3/2 minus 1 into what, again differentiating this one into 2x. So I can rewrite this equation, the simple k, सबको डिफरेंशिएशन माल समझ में आया ना बेटा, kq into r square plus x square whole to the power of 3/2 प्लस, देखो बेटा कहाँ आएगा,
k q x स्क्वायर, देखो 2 कैंसिल हो गई बेटा, तो दिस कम्स टू द, दिस गोस टू द minus 5/2, then comes to the denominator minus 3 divided by what I can write as r square plus x square whole to the power of minus 5/2. Got the point? Sorry, plus 5/2. It comes to the denominator. यहां से मैंने क्या कॉमन निकाल सकता हूं, देखो बेटा, r square plus x square whole to the power of 3/2 कॉमन निकाल लो, तो kq divided by r square plus x square whole to the power of 3/2 कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस है तो माइनस लिखो यहाँ पे 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक बचेगा ना बेटा, यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, आ गया समझ में? तो इसको क्रॉस शुड बी इक्वल टू व्हाट 0. So either this will be 0 or this will be 0. This goes to the 0, then what will happen beta? Then I can rewrite in this way. So very simple one. 1 minus 3x square by 1 minus 3x square by r square plus x square should be equal to 0. Then 3x square by r square plus x square should be equal to 1. Then 3x square should be equal to r square plus x square. Then what happened? X square comes to this side. Then what will happen, beta? Very simple one. R square is equal to, then R is equal to what I can write? R is equal to x upon root 2. Sorry, x is equal to what I can write as x is equal to R upon root 2. देखो, अगर मैंने ग्राफ डाल दो, ग्राफ प्लॉट किया, देखो ग्राफ प्लॉट किया, तो कहां पे मैक्सिमम होगी बेटा बोलो? This is the maximum at this particular point. This is the r by root 2 distance, and in this way it is what beta? Minus r by root 2. Means at what particular point the electric intensity is maximum? Plus or minus r by root 2, plus or minus r by root 2. Got the point beta? Electric intensity is maximum at plus or minus r by root 2. At 0, electric intensity at the center, it will be 0. At infinity, it will be 0, and it will be maximum at what distance beta? Plus or minus r by root 2. बहुत important question, बहुत directly नीट में पूछ सकता है. At what distance electric intensity along the charged conductor's axis will be 0? Charged ring axis will be 0. Sorry, maximum. At what distance beta? r by plus or minus r by root 2. ठीक है ना बेटा? बस कॉपी करो सब जन. चलो आगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड रिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग कितना बेटा? kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, और एट व्हाट डिस्टेंस इट विल बी मैक्सिमम? एट r by root 2 it will be maximum. Very simple things. See बेटा, what I am telling. अगर सोचो कि आपको एक चार्ज्ड रिंग दिया गया है, वेरी सिंपल, एक सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है, या आपको एक क्वार्टर सर्कल रिंग दिया गया है, इज द क्वार्टर सर्कल रिंग, चार्ज रिंग, और इफ यू आर गिवन बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल लाइक दिस, then what will be the intensity here? There is a derivation, but so unnecessary time waste. बहुत जगह पे मैं बोलता हूँ, डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ले लेंगे तो आपको सिंपल हो जाएगा. क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाई r इंटू साइन अल्फा बाई 2. याद रखो, we can derive also, it's not a big task actually. So what is electric intensity? 2k lambda by r into sin alpha by 2. अगर सोचो कि इसको मैंने सेमी सर्कल को लगाया, हाफ सर्कल को लगाया, तो हाफ सर्कल का कितना होगा बेटा बोलो? 2k lambda by r into sin. हाफ सर्कल का मतलब एंगल कितना बनेगा बेटा बोलो? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 180 डिग्रीज बनेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या आएगा? 180 by 2 is nothing but sin 90. That can be written as what? 2k lambda by r. Quarter circle, quarter means what? Alpha is equal to 90 degrees. Then what is the electric intensity beta? Electric intensity due to a quarter circle. कितना बेटा बोलो? Sin 90 by 2 can be written as what? Sin 45. Sin 45 can be written as what? 1 by root 2. 1 by root 2. 2 by root 2 is nothing but the root 2. Root 2 k lambda by r.
root 2 k lambda by r. So you can, if you remember this one, if I say a complete whole circle, then whole circle means alpha is equal to how much beta? 360 degrees. Alpha is equal to 360. 360 by 2 is equal to 180. Sin 180 is equal to 0. So that's why electric intensity at the center will be 0. A very smart formula, that electric intensity due to any circumference of a circle. Copy this formula. Electric intensity due to any circumference of a circle का formula कितना बेटा बोलो? 2k lambda by r into sin alpha by 2. ठीक है भाई, अपने को समझ में आया. जो प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देखेंगे इसमें. देखो इमेजिन करेंगे कि ऐसा कुछ एक्सिस दिया गया है बेटा. अगर सोचो यहाँ पे एक सर्कमफेरेंस दिया गया है, सोचो यहाँ पे एक सर्कमफेरेंस दिया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज है सर्कमफेरेंस से, आर का फिर सर्कमफेरेंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है ना. यहाँ पे एक सर्कमफेरेंस दिया गया है, इमेजिन करेंगे दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. ओके, दिस इज आर दूरी and this is also radius will be r. He is asking find the electric intensity at this particular point. Then how to determine? Due to this, the electric intensity will be in which direction? In this direction. How much? It is a quarter circle. Quarter circle means what? Electric intensity 2k lambda by r into sin 90 by 2 means sin 45 is nothing but the 1 by root 2. I can rewrite it as a root 2k lambda by r for 1. And what is this one beta? It is also quarter circle. So what is the answer? Root 2 k lambda by r. But both are in same direction. Why? Because it is a negative one, it is a positive one. So both are in same direction. Just add them. So E net is equal to what is that? 2 root 2 k lambda by d or r. I can do that. अगर आपको दिया गया कि प्रॉब्लम में कुछ अलग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या अगर सोचो कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, याद रखो. क्लियर. अगर ऐसा कुछ दिया गया, इमेजिन करो कि ये एक चार्ज रिंग है, इसके ये एक चार्ज रिंग है, इमेजिन करेंगे. ओके, इसका रेडियस r है बेटा और इसकी रेडियस 2r है, इमेजिन करें. ये पॉजिटिव है. ओके, एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव. देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर at this particular point? Due to this one, what? Root 2 k lambda by r. Okay, and due to this one, root 2 k lambda by 2r. Root 2 k lambda by 2r. Got the point बेटा? Very. अगर सोचो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर ये सोचो कि नेगेटिव है, then what I can write it as root 2 k lambda by r is in this direction, root 2 k lambda by 2r is in this direction. Which one is greater? Root 2 k lambda by r is greater. So we can very easily determine the electric intensity due to any circumference of a circle. Any circumference of a circle. It's not a big deal. अगर मैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम लिया कि एक रॉड लिया गया, सोचो इमेजिन करो ये पॉजिटिव चार्ज रॉड, वेरी सिंपल वन. ऐसे प्रॉब्लम्स आपको अभी जो शुरुआत हो रहे हैं मैग्नेटिज्म में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे. यहाँ पे चार्ज कंडक्टर बोल रहे हैं, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर बोलेंगे. सो प्रॉब्लम्स और अंडरस्टैंडिंग विल बी सेम आएंगे फिर से. सो यहाँ पे एक रिंग है, ऐसा इमेजिन करें, ऐसे कुछ चार्ज कंडक्टर इमेजिन करेंगे. दिस विल बी. So what he is asking with this problem, the very simple one, is asking find the electric intensity at this particular point. This distance is r. This is the infinite. Got the point? Due to rod, it is a semi-infinite rod. So what is a semi-infinite rod formula beta? K lambda by d into sin 90 plus sin 0 is nothing but the sin 90 is equal to 1. So electric intensity due to semi-infinite rod will be K lambda by d or r. I can rewrite. For this one it is in a half circle. What is the half circle formula beta? Here this will be in this direction. So one is in this direction and another one is in this direction. What is the formula beta? For the half semicircle, 2k lambda by r into sin 180 by 2 means sin 90, मतलब 2k lambda by r, मतलब k lambda by r and 2k lambda by r. One intensity will be E1 is in this direction, E2 is in this direction. And what about this one, this rod? See, what is electric intensity along the length of the rod? It's always 0. Electric intensity along the length of the rod is equal to 0. Why? Because sin 0 is equal to 0. So I can rewrite it as this 2 only. So net electric intensity will be like this.
व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? अंडर रूट ऑफ k लैम्बडा बाई r का होल स्क्वायर प्लस 2k लैम्बडा बाई r होल स्क्वायर. दिस इज द नेट इंटेंसिटी. वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स, इट्स नॉट अ बिग थिंग. सो अगर ऐसा पूछा गया, मैंने थोड़ा प्रॉब्लम्स को okay. So ring and rod we completed. Then we are discussing about the disk. अगर एक डिस्क दिया गया है, अगर सोचो कि ये डिस्क है, इमेजिन करो चार्ज डिस्क है. कौन सी डिस्क है बेटा? चार्ज डिस्क. इस चार्ज डिस्क की वजह से यहाँ पे चार्ज कितना है? अगर सोचो डिस्क में चार्ज कैसा है, इट विल बी स्प्रेडेड ओवर द सरफेस. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैन बी रिटन एज q by a, और q is equal to what I can write it as q is equal to sigma e. इस चार्ज डिस्क के वजह से अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क इंटेंसिटी कितनी है वो निकालना है अपने को. अगर सोचो मैं इसी को इस डायरेक्शन में प्लॉट किया, देखो इमेजिन करेंगे, दिस इज द डिस्क एक्चुअली, दिस इज द डिस्क, चार्ज डिस्क. लेट्स इमेजिन चार्ज डिस्क of radius how much beta? Radius will be r. Along the axis at this particular point you are determining the intensity. यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करो. ये दूरी अगर मैंने x माना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो x दूरी पे along the axis of the disk we are determining what? Electric intensity. So डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है? डिस्क को how to consider the smallest part. सो डिस्क को तोड़ने का तरीका क्या है बेटा? छोटे छोटे पार्ट्स में r रेडियस पे एक छोटा रिंग मान दो बेटा, जिसका विड्थ है dr. समझो इसका विड्थ कितना है बेटा? dr समझो, थिकनेस dr समझो इसका. सो r रेडियस 1, तो इसका एरिया कितना हुआ? एरिया इज इक्वल टू स्मॉल एरिया dA इज इक्वल टू 2 pi r dr. इसका एरिया कितना हुआ? 2 pi r dr. Then what is the charge on this one? dq is equal to sigma dA. What is that? Sigma into 2 pi r dr. 2 pi r dr is nothing but the what बेटा? dq charge. इस dq की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी, यही डायरेक्शन में होगी बेटा. हाँ. सो कितना होगा यही डायरेक्शन में? अगर इंटेंसिटी निकालूं तो एक रिंग की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी? kqx divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. अभी देखे थे अपन. Clear? So dE is equal to smallest part intensity is equal to kq. q कितना है बेटा? dq कितना है? sigma 2 pi r dr. kq x कितना है? x ही है बेटा. x divided by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. ठीक है ना बेटा? So got the point? So total electric intensity is nothing but the, if I integrate this over the limits what? Over the limits 0 to r. Over the limits 0 to r. ऐसे कितने रिंग्स मिलेंगे? 0 से लेके r रेडियस तक आपको रिंग्स मिलेंगे. यहाँ पे वेरिएबल्स, और अगर मैं इसको k को 1/4 pi epsilon naught माना, तो मैंने फार्मूला क्या हुआ बेटा? बोलो 1/4 pi epsilon naught. 4 pi and 2 pi cancel, then remaining thing is nothing but the sigma by 2 epsilon naught. Sigma by 2 epsilon naught. x एक कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के रखो, तो इंटीग्रेशन ओवर r dr by r square plus x square whole to the power of 3 by 2. Got the point? How I wrote this one? A very simple understanding. That how to integrate this one? That if I consider, then integration of dE can be written as what? E. Then if I consider r square plus x square, if I write like this here, then integrating. Considering the r square plus x square को अगर मैंने t square माना, तो r तो constant है बेटा. So sorry, x तो constant है बेटा. Then differentiating these two things, then 2r dr is equal to 2t dt. Then 2 cancel. Then r dr is equal to क्या है बेटा बोलो? t dt. इसको मैंने सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला कितना है बेटा बोलो मेरे को? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू r, ओवर द लिमिट 0 टू r. r dr का मतलब क्या हुआ? t dt. r dr का मतलब क्या हुआ? t dt डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था मैंने, टी स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 3/2, इट कम्स टू द टी क्यूब, इट कम्स टू द टी क्यूब, देन टी गेट कैंसल्स, रिमेनिंग थिंग इज व्हाट, 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, -1/t, माइनस 1/t, तो यहाँ पे सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/t, लिमिट्स आर व्हाट, 0 टू r, यहाँ पे लिमिट्स बदलेंगे अभी, क्योंकि वी टुक इट एज एन व्हाट, अगर सोचो कि r इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, बोलो, r इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू x. If r is equal to r, then this implies t is equal to what beta, under root of r square plus x square. Now the limits are what, 0 to what, I can write it as x2 under root of r square plus x square, under root of r square plus x square. Substituting the upper limit minus lower limit, then what will be the formula, comes to the sigma by epsilon naught. क्या लिखूं बेटा, बोलो, sigma by epsilon naught, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या लिख दो बेटा, डायरेक्टली लिखूं क्या यहाँ पे, हाँ भाई, सो 1/x माइनस 1/√r square plus x square. Got the point? How I wrote? I just substituted the upper limit minus lower limit by considering the -1. मैंने माइनस साइन को कंसीडर करते हुए मैंने अपर लिमिट, x को अंदर भेज दो बेटा, तो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x by x is equal to 1, ये x न्यूमरेटर में आएगा x upon under root of r square plus x square. Got the point? This is what बेटा, electric intensity due to what, disk, electric intensity due to disk along the axis of the disk. What is the formula, electric intensity due to disk along the axis of a disk, sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught into 1 minus x upon under root of r square plus x square, under root of r square plus, what is the formula beta, sigma by 2 epsilon naught. Tell me what is the formula, sigma by 2 epsilon naught into 1 minus x upon r square plus x square, r square plus x square is the electric intensity. How we did the things, just एक बार देख लीजिए बेटा, मैंने डिस्क को छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग्स में काटा, तो छोटे छोटे एलिमेंटल, एक एलिमेंटल रिंग का चार्ज कितना हुआ, सिग्मा डी ए, दैट इज नथिंग बट सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर डी आर. इसके वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी निकाला, हालांकि इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी, इधर ही रहेगी ना बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही रहेगी इस रिंग की वजह से. सो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सो आई कैन रीराइट इट एज के सिग्मा 2 पाई आर डी आर इनटू x डिवाइडेड बाय, इसमें k और सिग्मा और x कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको बाहर निकाला, सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. So I just integrated this one with this method. Then मेरे को क्या आया बेटा, फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा याद, ये सब फार्मूले याद रखना है, बस उतना है. सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, कुछ डेरिवेशन कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार डेरिवेशन देख लो कि कैसा है डेरिवेशन, बाद में आपको फार्मूला याद रहे तो बहुत 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 अच्छी चीज है. E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x upon under root of r square plus x square. What is the point beta? Electric intensity due to disk, electric intensity due to disk along the axis of the disk, along the axis of the disk. What the point? Yes.